I guess we are enough for the session and we can just proceed with. Actually, the session only wants to know, Daman, that how did you started and how you went to this what you are right now. So we'll be just very curious to know your journey to Walmart, and you're planning to proceed further. So just you can start with that. All right. So, Walmart, I got placed in Walmart during an on-campus placement drive. All right. And ज़रूरी नहीं है कि on campus में ही you can get placed. You can also get placed in off campus. And to be pretty honest, I didn't plan to get into Walmart. Like I didn't particularly prepare for the company Walmart, right? सो होता क्या है कि स्टार्टिंग में हमारी खुद से इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, वी डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम अ सेल्फ, बिकॉज हमें नहीं पता होता कि हमारा लेवल कितना है, राइट? एंड वी गेट टू नो अ सेल्फ एंड अ लेवल व्हेन वी एग्जामिन अ सेल्फ, लाइक व्हेन वी स्टार्ट pushing our limits, right? So when the placement season started in a college, right? So in the beginning, what was happening? Ki many of the students didn't even get shortlisted. Right. This is a one big flaw we can say during the on-campus placements. Right. So in the beginning, I was very sad because I didn't get shortlisted for many of the good companies. Like many good companies came, like Goldman Sachs and even TCS last year. So earlier, I was very disappointed that why am I not getting shortlisted? But then I waited patiently and patiently. Then some good companies came like RT Camp and Amio. So I got shortlisted for them and I gave the interviews. I cleared the test rounds. And what I did was I realized what I was doing wrong. I didn't get selected for RT Camp. I got rejected by Amium. I realized what I was doing wrong. I found out those mistakes and then I later worked on those mistakes. And that's how I was able to perform well in the interviews in the companies that came later on, right? So what you can say conclude from the whole journey that I have been, I can say that one should start working right from the beginning. अगर आपको अच्छी placement चाहिए, you have to prepare for it right from the first day of the college. Why don't just wait for the college? आप school से ही शुरू हो जाओ. Like if you have interest, right? Whether it is a coding profile, whether it is the database profile, DBA, right? You have to work on it. What colleges these days give us, they just guide us. They show us the path that we have to take. Like वो हमारा basic clear करा देंगे, लेकिन उसके बाद जो करना है वो हमने ही करना है, right? We have to do it on our own. We have to build projects. We have to take some courses online that give deep knowledge, extensive knowledge about that particular subject that we like. Right. So that was how I started from the beginning. I just had little to none coding knowledge. Right. I didn't know any programming. I had worked on C a bit in the school, but the real first step that I took into the world of programming was when I got into the college and we got a special subject like programming, problem solving, and we got C, we got C++. That's when I started the programming journey. राइट, तो होता क्या है कि इन द स्टार्टिंग व्हाट वी डू इज वी जस्ट स्टडी एज मच एज वी नीड टू क्लियर द एग्जाम्स. वो चीज़ नहीं करनी है, राइट? तो आई जस्ट पढ़ता रहा बिकॉज आई लाइक कोडिंग. शुरू से इंटरेस्ट बन गया था एक चीज, तो पढ़ता गया एंड द इंटरेस्ट ड्रू मोर एंड मोर एंड later I got introduced to the data structures. And for most of the students, they find data structures are a bit difficult, right? Like अगर हम C++ से आते हैं तो pointers का थोड़ा concept, it seems a bit complicated for the starters, but later on when you get the hang of it, it becomes very easy for us. And slowly I got used to the data structures as well, and as well as the algorithms. We had a particular subject in the college, but to be honest, that just gave a kickstart. उसने बस जर्नी को स्टार्ट कर दिया था. अब there was a big journey, there was a long journey actually. तो वो कवर अप खुद करनी पड़ती है. तो द जो हमारा कह सकते हैं, जो सबसे मेरा कह सकते हैं फ्लो बना था, जो फ्लो बना था वो बना था when the lockdown started. Because when the lockdown started, it saved a lot of time in our lives, right? हमें रोज कॉलेज ट्रैवल करना होता था थोड़ा, ठीक है?
लाइक पीजी में हम रहते थे, हॉस्टल में रहते थे, तो वहाँ पे पढ़ाई का इतना माहौल नहीं होता था. बट व्हेन द लॉकडाउन स्टार्टेड, ऑनलाइन क्लासेस online classes were there, and most of the students don't attend the online classes, and even if they do, they just put it on mute, right? They just scroll the Instagram and Netflix, and that's all they were doing. But what I did was that at that time I was focusing on data structures. I was focusing on my problem solving skills. I was solving problems on the hacker rank, on lead code, on code chef. I tried many platforms, code signal even. So I can say that the real elevation uh, into my knowledge was when I started working on my problem solving skills as well as on the data structures. So उससे ही लाइक मुझे इतनी नॉलेज मिली, मैंने इतना पढ़ा, तो मैंने बाद में अब सोचा कि why don't just put this knowledge into building something, right? So I started building projects. Or what I did was I chose Java for my problem solving skills and for learning data structures. But later on, I chose JavaScript for my projects, because web projects में क्या होता है, हम लॉजिक्स वही लगा रहे हैं जो डेटा स्ट्रक्चर्स में होते हैं, वो डेटा स्ट्रक्चर्स भी यूज कर रहे हैं, लॉजिक बिल्डिंग भी हमारी हो रही है. बट इन वेब व्हाट वी हैव इज जो रिजल्ट्स होते हैं हमारे, वो हमें इंस्टेंटली देखने को मिलते हैं, राइट? कि हमने जस्ट थोड़ी बहुत HTML लिखी, थोड़ी बहुत CSS लिखी, तो फ्रंट एंड पे इतना काम नहीं करना पड़ता. वी कैन फोकस ऑन द बैक एंड रियली. बट इफ वी रियली बिल्ड एन एप्लीकेशन इन जावा, लाइक अ फुल एप्लीकेशन विद द फ्रंट एंड द बैक एंड, तो उसमें ना फ्रंट एंड में थोड़ा हमें एक्सटेंसिव स्टडी करनी पड़ती है. लाइक जावा एफएक्स के पैकेजेस वगैरह पढ़ने पड़ेंगे. अगर पाइथन में कर रहे हैं तो पाइथन की लाइब्रेरीज, पाइगेम वगैरह थोड़ी सीखनी पड़ती हैं, राइट? बट आई वांटेड टू फोकस ऑन द कोर थिंग, जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जो एल्गोरिदम्स हैं, बिकॉज these are the things that help us to get placed in a big company, right? In the lockdown, I used to wake up whole night and watch videos on YouTube, watch mock interviews. There's a channel with there's a person, yes, Clement. एल्गो एक्सपर्ट का नाम बहुतों ने सुना होगा यहाँ पे. तो वो क्लेमेंट ने बनाई थी. क्लेमेंट वाज एक्स गूगल इंजीनियर. So I used to follow that guy. He took many mock interviews, many coding interviews, and that gave me a very big amount of exposure that how we have to tackle a problem in the coding interviews. कि हमें problem दी जाती है, तो we don't just jump directly into the solution. We first analyze that problem, and then we first tell the interviewer a naive solution, and then we tell him an optimized approach. So that's how I got to know that how I need to represent myself into an interview. And after I worked on a lot on my technical skills and build projects, so technical knowledge to ho gayi. So there was a big bump that I lacked a lot of interpersonal skills and intercommunication skills. आता होता था, लेकिन जो nervousness होती है कई बार, that that can be an issue. और ये issue हुआ था starting में बहुत. I would like to share the experience of the RT Camp. RT Camp is a WordPress development company, right? तो पैकेज अच्छा था, वर्क फ्रॉम होम कंपनी थी. इट इज़ लाइक रिमोट वर्क वाली कंपनी है, कोई ऑफिस नहीं है. तो मेरा इंटरव्यू हुआ. आई न्यू मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ द आंसर्स मैंने दिए, राइट? बट व्हाट वाज द बिग इशू देयर, दैट कई आंसर्स मुझे जो आते भी थे, आई गॉट नर्वस एंड आई कुडंट आंसर दोज क्वेश्चंस वेरी वेल. आई गॉट कंफ्यूज्ड, आई गॉट लाइक, एक होता है ना एक्सप्लेनेशन देते देते बंदा इधर उधर चला जाता है, तो वो चीज़ हो गई, राइट? तो इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है, कामनेस और कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो this is how I worked on my skills, and I realized my mistakes all over my journey, and then I fixed them. I talked to my teachers about it. I asked them to take my mock interviews so that I can improve myself. So, and another thing that I learned during my journey is कि एक आध कंपनी में नहीं भी होती ना, कोई बात नहीं, आपने इंटरव्यू दिया, आपको एक्सपीरियंस मिला, एटलीस्ट यू ट्राइड. So I think one of our friend has a question. Actually, I would request the audience that we will have a question session later on. All right. First, I have a question personally, that many of us are from college only, and we are also from engineering only. So, Yes. what would be the best time to start with these data structures and programming? Obviously, that interest matters. Some students starts from the school days only. They have interest. Yes. Also, they have some facilities. Many of us buy their laptop in college only. So, what is the best time if you want to get placed in a good company? So, what would be the best time to start with all these things? And
so that it can take the minimum time to learn also and to proceed with your skills also. All right. So, what we can say, there's a proper ladder, right? There is each step. We have to take one step at a time, right? And we start from the bottom. With the bottom, we can say the basics of the programming, firstly, right? You have to take one language. You have to pick one language that you like. You can explore a bit if you want, but in the end, you have to choose one language. You have to learn the basics. You have to learn, you have to go a bit deep, not much, a bit, right? Because if you want to build projects, you have to you need to have the knowledge of that particular language. Like अगर java में projects बनाने हैं तो you need to have extensive knowledge of the packages of the java. You need to have knowledge. If you want to use hash sets, you need to know कि वो कौन सी library है उसके, what are the methods that you can use with the hash sets. So firstly you have to get familiar with the programming language, right? Whether it is javascript, whether it is c, whether it is c++, you have to get familiar with it. You have to uh, get familiar with the paradigms. You have to work on the oops, which is one of the main thing. ये सबसे पहली चीज होती है. oops का concept हमेशा याद रखो, हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा. Right. So firstly, we have to focus on the language itself. We don't have to worry about data structures and algorithms in the beginning, because होता क्या है कि अगर base अच्छा बन जाए, अगर programming language की जो base है, if we clear it very well, then we can easily start a journey with the data structures. Because I have seen many students jumping into the data structures without clearing the concepts of pointers in C++ or C. तो डेटा स्ट्रक्चर में जब लिंक लिस्ट वगैरह आती है तो दे गेट वेरी कंफ्यूज, लाइक हाउ इज दिस वर्किंग, हाउ इट इज मूविंग फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड. They get very confused, right? In the beginning it will be hard. I would admit that it was even hard for me. Like first time I learned about linked list, and I saw how it was working, like we are moving node to node, and it was a bit, we can say, थोड़ा तो मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में, because whenever we do a new thing हमारे लिए वो चीज़ नहीं होती है, हमें इतना नहीं पता होता, बट एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, whenever when we do it again and again and again, we get the hang of it, and then हमें वो बहुत easy लगने लगती है. Like if I now talk about me, linked list like is a very basic and most easiest data structure that I think for me. तो क्या होता है कि धीरे धीरे चीज़ें easy लगने लगती हैं. Right. So the best time, to answer your question, the best time would be, firstly, जैसे कॉलेज में जाते हो, राइट, इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग में, तो प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज पकड़ दो, शुरू कर दो, राइट. पिक वन लैंग्वेज एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, स्टार्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, गेट टू नो अबाउट द लाइब्रेरीज. लाइक अगर मैं बात करूँ, मुझे सी प्लस प्लस कितनी आती है, तो सी प्लस प्लस में लाइब्रेरीज फंक्शंस होते हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं आते. आई जस्ट नो हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, फॉर लूप्स, एंड दैट्स ऑल. बिकॉज आई वर्क मोस्टली ऑन जावा. जावा में मुझे बहुत पता है, जावा में लाइब्रेरीज वगैरह का पता है, राइट. तो एक लैंग्वेज पकड़ो, उसको अच्छे से करो, एंड व्हेन यू हैव द कॉन्फिडेंस, व्हेन यू हैव बिल्ट इनफ प्रोजेक्ट्स, एटलीस्ट 2 to 3 कॉलेज प्रोजेक्ट्स एंड 2 to 3 साइड प्रोजेक्ट्स एटलीस्ट, राइट, it takes almost an year. For me it took almost an year. For you it can be a different time, but you have to firstly clear the basics. You have, if working on java, you have to clear the you can say concepts of references and array lists, etc. Basic data structures, arrays, for loops, if conditional statements, etc. बेसिक एक बार क्लियर हो जाता है, उसके बाद देन मूव, उसके बाद यू कैन जंप इनटू द डेटा स्ट्रक्चर्स, बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा एडवांस हो जाता है स्टार्टर्स के लिए. तो अच्छा यही है कि पहले तुम अच्छे से वो क्लियर करो. अगर डाउट्स आते हैं तो आई वुड रेकमेंड joining some online programming communities. There are many communities on Discord as well as on Reddit, even on Twitter. Tech Twitter is a big thing. I learned a lot from the Twitter, right? So थोड़ा एक्टिव रहो. सोशल मीडिया तो चलाते ही चलाते हैं, राइट. इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, सब करते हैं, राइट. बट ऑल्सो यूज दिस टेक्नोलॉजीज, यूज दिस एप्स टू योर ओन प्रॉफिट, राइट. वी कैन यूज रेडिट, विच इज़ वेरी गुड थिंग. हमें अपने आसपास के लोगों से पता लगता है कि वो कर क्या रहे हैं, हमारे लेवल क्या हैं जो लर्निंग के. फॉर एग्जांपल, in the second year I found a person which was from California. He was also learning Java, and at time also I was also learning Java at that time. So we collaborated for a project, and it was a writing analyzer, which is which I also showcased on my resume. तो collaborations कहीं ना कहीं help जरूर करते हैं, ठीक है. collaborate भी करो. Don't never be shy to ask for help, right. अगर डेटा स्ट्रक्चर्स कर भी रहे हो, कहीं पे फंस जाते हो, तो you can ask for help from your seniors or from
anyone on the internet. Stack Overflow is a big we can say देन है हमें भगवान की, राइट? तो द बेस्ट, वही बात आ जाती है, बेस्ट टाइम कहाँ पे होगा जब तुम्हारे प्रोग्रामिंग के बेसिक क्लियर होंगे. एंड व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स देयर इज अ प्रॉपर लैडर दैट वी हैव टू फॉलो. लाइक एक प्रॉपर पाथवे है. ये नहीं कि डेटा स्ट्रक्चर शुरू किए तुमने सीधे लिंक लिस्ट पे शुरू कर दिया है, ठीक है. फर्स्ट यू हैव टू नो द बेसिक्स की एरे क्या होते हैं, व्हाट इज एरे, हाउ मेमोरी इज एलोकेटेड इन एरे, एंड वट एवर डेटा स्ट्रक्चर यू आर स्टडिंग, वट एवर टॉपिक यू आर स्टडिंग, वट एवर लैंग्वेज यू आर चूजिंग, उसका प्रैक्टिकल यूज केस, like advantages, disadvantages. These are the basic things that you need to know about everything you are learning, right? कि अगर जावा पढ़ रहे हैं तो जावा का प्रैक्टिकल यूज केस कहाँ है, राइट? जावा कहाँ कहाँ यूज हो रही है हमारे आसपास. प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सपोज पहले प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कहाँ यूज हो रही है. नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, नेटवर्किंग कहाँ यूज हो रही है. So these are the things that you need to follow. Linked list practical examples, linked list के practical examples, tools, stacks, or we have to move turn by turn, right? Firstly, we work on arrays, and then we get introduced to the concept of linked list, and then we slowly move to the queues and stacks. So there's a proper ladder, ठीक है? Step by step चलना है, and because हर एक data structures के क्या है, there are many methods, right? अगर हम एक linked list की बात कर लें, if we just talk about the linked list, there's insertion at front, insertion at end, insertion in the middle, right? And same for the deletion, at end, at front, at middle. So take it one by one. If you find it difficult, it's okay. सबको मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में. मैं भी कोई भगवान नहीं था, मुझे भी मुश्किल लगता था, सबको लगता है. कुछ होते हैं जीनियस होते हैं भाई जिनको नहीं इतना मुश्किल लगता, लाइक दे आर बोर्न कोडर्स वी कैन से. बट अगर आपको लगता है ना कि ये थोड़ा मुश्किल है, जस्ट प्रैक्टिस इट, ठीक है? धीरे धीरे खुद इजी लगने लग जाएगा. एंड व्हेन यू सॉल्व वन और टू प्रॉब्लम्स दैट इंक्लूड, लाइक लिंक लिस्ट मुश्किल लग रही है तो लिंक लिस्ट की एक दो कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, then it will become easy for you. And one of the biggest you can say गलती करते हैं बच्चे, there's biggest mistake कि वो डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ तो लेते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं करते. तो प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इम्प्लीमेंटेशन करते रहना बहुत ज़रूरी है. एंड जब डेटा स्ट्रक्चर सीख ले, व्हेन यू गॉट फेमिलियर विद द डेटा स्ट्रक्चर्स, देन यू हैव टू पुट इट ऑन इनटू यूज. और उसको यूज करने का प्रोजेक्ट्स में होते हैं यूज, नो डाउट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट using data structure, we use it mostly in the problem solving questions, we can say coding questions. तो ये गलती मैंने भी की थी. डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लिया, लिंक लिस्ट पढ़ लिया, क्यू स्टैक सब पढ़ लिया, उसके बाद यूज़ कहाँ है ये सोचता था. कि प्रोजेक्ट्स बनाता था उसमें, मतलब उसमें तो मैंने ट्रीज इतने यूज़ किए नहीं. आई वाज लाइक सोचता था. तो व्हेन आई स्टार्टेड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, लाइक एक्चुअली नॉट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, आई जस्ट वर्क ऑन माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. आई यूज टू सॉल्व 2 to 3 कोडिंग क्वेश्चंस एवरी डे ऑन हैकर रैंक, राइट? स्टार्टर्स के लिए हैकर रैंक बहुत अच्छा है. तो जो डेटा स्ट्रक्चर्स सीखे थे, what I learned all the data structures and algorithms, I put it into the use for solving coding problems. That also like you can say built up my problem solving skills. So yeah, that's how you need to learn data structures. पहले theory पढ़ो, then implement करो, then practice करो, put it into the use, right? So I guess that almost answers your questions. Yeah, you really answered my question. So, Daman, like we already know that due to this pandemic, many students and teachers as well has many things have already been shifted on internet, right? So, thousands of resources are available on the internet. Although we take it as a boon that yes, we can get everything from the internet. Even the people are not studying from the books; they are referring Google and tutorials, point geeks for geeks, WC schools. So what is the right resource that one should follow, or you followed to achieve your outcomes? So what is the right resource? Like many of us vary on different resource. ठीक है, GFG से ये पढ़ लेंगे, WC school से ये पढ़ लेंगे. So is this the right way, or we should just go through one certain resource and achieve that? Alright. So एक चीज मैंने अपनी इस जर्नी से जरूर सीखी है, यू कैन नेवर रिलाई ऑन अ सिंगल रिसोर्स, राइट? अगर तुम कोड विद हैरी से जावा का कोर्स पूरा कर रहे हो, ठीक है, यूट्यूब से, तो कोड विद हैरी ही इज अ वेरी ग्रेट यूट्यूबर, बट वो हर कोई डिटेल में नहीं, क्या पता उसने कोई चीज़ मिस कर दी हो, मे बी ही हैव मिस्ड 1 or 2 कॉन्सेप्ट्स, या फिर उसने कुछ बताया हो लेकिन उसकी डीप का कोई रीज़न ना बताया हो कि वाई इट इज़ वर्किंग. Like if we are using public static void main for Java, if there is a Java programmer here, so
इन द स्टार्टिंग देयर वाज अ वेरी क्वेश्चन जो हमारे टीचर हमसे पूछते होते थे कि ये जो पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन है इसका मतलब क्या है। एंड उस टाइम पे हम सारे चुप कर जाते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था। ठीक है, जावा का हमने कोर्स किया, हमने यूडमी से कोर्स उठा लिया, ठीक है, 500 रुपये पे किए, कोर्स किया, उसको वीडियोस को टिक लगा के सर्टिफिकेट निकाल के दे दिया। ठीक है, वीडियोस भी देख ली किसी हद तक कहीं ना कहीं, बट व्हेन ही आस्क्ड अबाउट इफ पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन क्या होता है, देयर वाज कंप्लीट साइलेंस इन द क्लास। किसी को पता नहीं था, सबको पता था पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, लेकिन मेन फंक्शन को पब्लिक स्टैटिक वर्ड क्यों बनाते हैं हमेशा। एंड व्हाट आर दोस स्ट्रिंग आर्ग्स दैट वी गिव, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स एरे, लाइक अगर कोई जावा वाला होगा तो उसे पता होगा, क्या पता उसे इसका आंसर भी बताओ। तो फ्रॉम दैट आई लर्न कि हाँ, अगर एक तुमने एक सिंगल कोर्स ले लिया और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यू विल लर्न एवरीथिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम दैट सिंगल कोर्स ओनली, देन यू आर रॉन्ग। बिकॉज अगर एक बंदा तुम्हें एक पर्टिकुलर टॉपिक की डीप नॉलेज दे भी रहा है, ठीक है, तो देर माइट बी सम अदर पर्सन ऑन द इंटरनेट हु हैज़ अ बेटर नॉलेज ऑन सम अदर टॉपिक। ठीक है, अगर एक बंदे ने लिंक लिस्ट अच्छे से पढ़ा दी तो दूसरा ट्रीज अच्छे से पढ़ा रहा है, तीसरा ट्रीज के सब टाइप्स, बाइनरी ट्री, एवीएल ट्रीज एक्सेट्रा, मिन हीप, मैक्स हीप्स, ये सब अच्छे से पढ़ा रहा है। तो वी कैन नॉट रिलाई ऑन अ सिंगल रिसोर्स, राइट। एंड अगर बात की जाए कि बेस्ट रिसोर्स कौन सा है, yeah, तो everybody has a preference in this. Some people like learning from books, right? इतनी इतनी किताबें होती हैं, उनको पढ़ते हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बुक्स आर वेरी, लाइक यू कैन से ग्रेट, अच्छा सोर्स है बुक्स, बिकॉज बुक्स में ना डीपली समझाया होता है, एग्जाम्पल्स भी अच्छी ली होती हैं, राइट। बट ऑल्सो देयर मस्ट बी पीपल लाइक मी, मैं बुक्स देख के नींद आती है भाई, बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमें बुक्स अच्छी नहीं लगती थी, पता नहीं क्यों। वैसे भी इट्स लाइक कि मॉडर्न जनरेशन और लाइक मोस्टली इवन मैं अपने आसपास देखता हूँ अपने फ्रेंड्स को, दे मोस्टली स्टडी फ्रॉम द इंटरनेट, राइट। सो अब इंटरनेट पे तो वाइड वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, सम स्टडी फ्रॉम यूट्यूब, सम स्टडी फ्रॉम यूडमी। कईयों को लगता है कि यूट्यूब यूडमी पे क्वालिटी कंटेंट नहीं है तो दे गो फॉर एक्सपेंसिव ऑप्शंस लाइक कोर्सेरा, और राइट। तो बहुत सी ऐसी रिसोर्सेज तो बहुत हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स करने के लिए कई कोर्सेरा से कर लेते हैं, कई एल्गोरिदम एल्गो एक्सपर्ट आईओ से कर लेते हैं, लाइक वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं, ठीक है। बट वी कैन नॉट रिलाई ऑन अ सिंगल वन। अगर एल्गो एक्सपर्ट का तुम 7,000 का पैकेज भी ले रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिस कर जाओगे, सब कुछ हर जगह नहीं पड़ा होता। वी हैव टू लाइक ब्रॉड, और यू कैन से साइट जो है अपनी वो ब्रॉड रखनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ तुम गीक्स फॉर गीक से पढ़ रहे हो, कुछ ट्यूटोरियल्स पॉइंट से पढ़ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। कि अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम किसी एक रिसोर्स पे फिक्स नहीं रह रहे, तो दैट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स ऑल राइट। वट मैटर इज दैट यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, दैट यू आर लर्निंग समथिंग इन डीप, यू हैव द नॉलेज, और वो सही पढ़ रहे हो, एज लॉन्ग एज द रिसोर्स इज राइट, ठीक है। अगर वो ट्रस्टेड रिसोर्स है लाइक गीक्स फॉर गीक्स, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ये अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे मोस्टली सही ही होता है नॉलेज। इवन गीक्स फॉर गीक्स में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके इन डेप्थ आर्टिकल्स भी होते हैं। सो yes, if you prefer books, you can prefer books. There are even free PDF versions available of various books. Even मैंने भी starting में PDFs डाउनलोड की थी, but I really never touched them because वही की preference की बात आ जाती है। For me, I just mostly relied on video courses, Udemy courses, and on the YouTube, right? So for Java, I mostly relied on Udemy and my teachers, and for data structures, I relied on various resources. I relied on YouTube, I relied on Coursera, I relied on Algo Expert. तो डेटा स्ट्रक्चर तो ऐसी चीज़ है भाई, खत्म ही नहीं होगी कभी, तुम जितना मर्जी पढ़ रहो, राइट। तो जस्ट डोंट स्टिक टू वन रिसोर्स, ठीक है, जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा है जस्ट ग्रैब इट, ऑलराइट। सो यस, दैट्स प्रीटी मच इट। Okay, very, very truly said, Daman. Okay, next I wanted to know that how much do our projects play role in the resume? Like many of us are scared, like we do not have projects. We are in doubt that whether we will be selected or not, or we do not have done any internships. So, is really projects important, or some one or two projects are sufficient for the resume? And ऑलराइट, also, which kind of projects you um, prepared for your selection? ऑलराइट। सो द quantity of the projects doesn't matter much here, but the quality and the idea behind the projects matter a lot, right?
आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स, लाइक जैसे कि हम पढ़ें कि हम प्रोजेक्ट्स बनाएं, हम हमारे सिर पे हर सेमेस्टर 2 प्रोजेक्ट्स का बोझ डाल देते हैं। दे द कॉलेज टीचर्स आस्क अस टू सबमिट 2 प्रोजेक्ट्स ईच सेमेस्टर, राइट। तो बच्चे थोड़ा ना वो कहते हैं कि लोड पड़ गया हम पे, राइट। बट व्हाट दे डोंट रियलाइज कि प्रोजेक्ट्स आर द वे, वो एक रास्ता है कि तुमने जो सीखा है ना वो तुम एक प्रैक्टिकल यूज में डाल दो, राइट। लाइक इफ यू हैव लर्न जावा, तो जावा पे प्रोजेक्ट बनाओ, आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड एक अच्छा प्रोजेक्ट बना लिया, अगर इफ़ यू हैव अ यूनिक आइडिया, इफ यू हैव अ इनोवेटिव प्रोजेक्ट, यू कैन शोकेस इट ऑन योर रेज्यूमे, राइट। एंड प्रोजेक्ट्स मैटर अ लॉट इन एन इंटरव्यू, राइट। कोई भी इंटरव्यूअर होगा वो ये ज़रूर चेक करेगा कि तुम्हारे रेज्यूमे पर प्रोजेक्ट्स मेंशन हैं, और वो प्रोजेक्ट्स आर दे यू कैन से स्टैंडिंग आउट और नॉट, थोड़े इनोवेटिव लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। लाइक फॉर माई resume, it was a, we can say, it was a productivity management app, right? So productivity management app, it was a unique concept. It was basically a concept, like 2 different websites के जो concepts थे उनको मैंने मिक्सअप करके एक ऐसी चीज़ बनाई थी जो मुझे पर्सनली चाहिए थी। प्रोडक्टिविटी मैनेजर वाज जस्ट कि हम एक दूसरे को टास्क असाइन करते हैं, लाइक इफ वी हैव अ टीम, हम एक दूसरे को असाइन कर रहे हैं, हम एक, और उसी सॉफ्टवेयर में हम एक दूसरे से चैटिंग कर रहे हैं, वी कैन सेंड messages to each other, we can form groups, and we also have a personal time tracker in built in that project, जिससे हम खुद की पर्सनल प्रोडक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं कि हम कितना टाइम कितने प्रोजेक्ट पे डाल रहे हैं, right? So this was whole idea of that productivity management tool, and this was the project that impressed the interviewer in the Walmart, we can say. I guess it was second technical round. Second technical round में इंटरव्यूअर की ये, लाइक उसको काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट लगा, मेरा यूनिक आइडिया था। तो बेसिकली इंटरव्यूअर प्रोजेक्ट्स को देख के ये वी कैन से जजमेंट करता है कि वेदर दिस पर्सन कैन वर्क ऑन अ बिग प्रोजेक्ट और नॉट, राइट। उसको पता है कि टेक्नोलॉजीज इतनी मैटर नहीं करती। लाइक अगर मैं बताऊं तो मेरे जो इंटरव्यूज थे वो जावा में हुए थे, लेकिन जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे देवर मोस्टली वेब प्रोजेक्ट्स, राइट। तो इंटरव्यूज नो कि अगर इसको डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, तो ये टेक्नोलॉजी स्विच कर लेगा। बट ही वांट्स टू सी कि जो इसने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनका आइडिया थोड़ा यूनिक है कि नहीं है, and whether he will be able to handle a big project or not in the future, because कंपनीज जब हायर करती हैं वो ये देख के हायर नहीं करती कि हाँ हम एक वेब डेवलपर हायर कर रहे हैं, ये सारी जिंदगी वेब डेवलपर रहेगा, नहीं। वो ये भी चेक करते हैं कि वेदर ही विल बी एबल टू मैनेज अ टीम इन द फ्यूचर और नॉट, कि अगर कल को इसके सिर पे हमने कोई जिम्मेदारी डाल दी कि तुमने एक पूरी टीम संभालनी है, तो वेदर ही विल बी एबल टू डू दिस और नॉट, right? So projects matter a lot. They showcase your practical experience in on working on things, like how you see things, like अगर तुमने कुछ अचीव करना है, तुमने एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो तुम स्टेप बाय स्टेप कैसे चलते हो, they also see that. So build projects as much as you can, right? And on the resume you have to mention 2 to 3 projects, and जो तुम्हारे बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनको मेंशन करो, ठीक है। ट्राई करो तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो एक यूनिक आइडिया है, ठीक है। इट्स ओके कि आप किसी दूसरी चीज़ को रेप्लिकेट करके बना रहे हो, वो एक अच्छा तरीका है सीखने का। बट इफ़ यू वांट योर प्रोजेक्ट्स टू स्टैंड आउट, यू हैव टू डू समथिंग इनोवेटिव, राइट। स्टार्टिंग में बट आई फेस्ड द इशू कि हम सोचते हैं कि क्या इनोवेटिव बनाए, आइडियाज़ नहीं आते दिमाग में। बट व्हेन वी एक्सप्लोर, राइट, लाइक मैंने ये टूल्स वगैरह यूज़ किए ऑनलाइन प्रोडक्टिविटी के, एंड आई फाउंड समथिंग दैट मिस्ड इन इट। लाइक मैंने वो यूज़ किया, मुझे फील हुआ कि हाँ ये एक और एक्स्ट्रा फीचर होना चाहिए था। रीबिल्ड दैट प्रोडक्ट विद दैट एडिशनल फीचर एंड देन यूज दैट प्रोडक्ट फॉर योर सेल्फ, राइट। तुम्हें लगता है तुम कोई सर्विस यूज़ कर रहे हो, उसमें कोई चीज़ मिसिंग है, रीबिल्ड दैट सर्विस बाय योर सेल्फ, राइट। इट लाइक बहुत तुम्हें एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करना भी आएगा, ठीक है, और आपके रेज्यूमे में एक अच्छा प्रोजेक्ट बन जाएगा शोकेस करने के लिए। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट माई प्रोजेक्ट्स मिस्ड इज दैट मेरे प्रोजेक्ट्स में ना डेटाबेस का यूज़ काफ़ी कम था, राइट। आई डिडंट यूज मच डेटाबेसेस, आई डिडंट यूज दैट schemas that we have in databases, बड़े सिंपल थे, लाइक मेरे जो डेटाबेस के टेबल्स थे। तो आई गोट, लाइक मैंने एक एमईओ कंपनी थी उसमें मेरा इंटरव्यू हुआ था, एमईओ में मेरा रिजेक्शन नहीं हुआ था, एंड पे आकर रिजल्ट होल्ड पे लगा दिया था, राइट। तो इन द इन एमईओ
technical interviews, what happened that उसने मेरे projects देखे and he saw that I didn't have much databases used in my projects. ठीक है, database connect किया हुआ है, एक दो table बनाए हुए हैं बस, ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ. ठीक है, तो try to build projects that they have extensive usage of databases, build login systems as well, because they give you a basic understanding of how security systems works, like how tokens get interchanged in the client and server, JWT, authentication methods, and a lot of things. Like I can't even start right now because फिर तो बोलते ही रह जाएंगे. ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स बनाओ, ऐसे बनाओ कि थोड़े से स्टैंड आउट करें एंड यूज लाइक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. थोड़ी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लाइक रिएक्ट हो गई, नोड हो गई, एक्सप्रेस अपना फ्रेमवर्क हो गया, मारिया डीबी, मोंगो डीबी. use these latest technologies. Don't just rely on one Java, right? Don't just rely on MySQL. नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनको भी यूज करो. इफ द इंटरव्यू इज, अगर इंटरव्यू तुम्हारा रेज्यूमे देख रहा है एंड वो देख रहा है कि तुमने यू हैव वर्कड ऑन मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड मल्टीपल डेटाबेसेस. आई हैड वर्कड ऑन माई सीक्वल एंड मोंगोडीबी एज वेल, राइट? तो कहीं ना कहीं दे ऑल्सो जज योर, यू कैन से, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी भी वो देखते हैं. ठीक है, कि बंदा वर्सेटाइल है कि नहीं है. तो यू ऑल्सो हैव टू लुक फॉर दैट. ठीक है, डोंट जस्ट स्टिक टू वन लैंग्वेज फॉर योर प्रोजेक्ट्स. यू कैन ऐड एज मेनी लैंग्वेजेस एज यू कैन, बट होता क्या है कि अगर तुम एक लैंग्वेज तो पक्की रखनी ही पड़ेगी. ठीक है, अगर जावा में तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो वो पक्की रखो अपनी. प्रोजेक्ट्स में अगर तुम्हें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज करनी है, यू कैन इंक्लूड दैट, राइट? सो प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. नेवर अंडर, क्या कह सकते हैं उन्हें, प्रायोरिटी ज़रूर दो. ठीक है, दे प्ले अ बिग रोल इन योर रेज्यूमे. ठीक है, एंड कभी भी इंटरनेट से प्रोजेक्ट्स डाउनलोड करके मत डालो रेज्यूमे में, बिकॉज पहली बात तो वो इनोवेटिव नहीं होंगे. ठीक है, एंड द सेकंड थिंग, इफ द इंटरव्यू आस्क्स यू हाउ यू इम्प्लीमेंटेड दिस फीचर, एंड यू विल बी लाइक सिटिंग लाइक दिस, एंड उसको समझ आ जाएगा, because these interviewers are very smart, right? They are experienced, they have been working for the company for, I don't know, like 5 to 10 years का experience होता है उनके पास. तो आप उन्हें पागल तो बना नहीं सकते ना, because they have a lot of experience. So try to put projects that you have worked on yourself. ठीक है, work on projects by building teams. ठीक है, teams में काम करो, because वो ये भी check करते हैं कि are you a team player or not, right? Make a team of 2 to 3 students, your own classmates, right? And work on those projects collectively. Like teamwork show करो अपना. If you are managing backend, ask your classmate to manage the front end, right? So projects build में मतलब बहुत importance है, ignore मत करो. They play a big role, because whenever we are sitting in a technical interview, द इंटरव्यूअर जो होता है वो रेज्यूमे ज़रूर देखता है. रेज्यूमे देखेगा, टेक्निकल इंटरव्यू में प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, तो वी कैन नॉट इग्नोर दैट, राइट? बट डेटा स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने पड़ते हैं, तो प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना ही पड़ेगा. या सो Very well answered, Daman. So I have been holding some questions of the audience for us quite long time. So now ऑलराइट. I would like the audience to ask their queries from you, and you guys can raise your hands. I'll be calling your names so that you can proceed asking questions with Daman. ऑलराइट, अभिषेक राणा. Okay, Abhishek. Good evening, sir. Sir, I have a question related how communication is main in organization, because sometimes our English is not better, but our development skills is best. ऑलराइट, सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन. तो अभिषेक, इफ यू, अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश इतनी नहीं अच्छी, तो इट इज़ ओके, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट बिग कंपनीज, कई बार क्या होता है, कंपनीज पे, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है. लाइक some companies want कि उनके जो employees हैं, they have a good communication skills, right? Because in future if they have to like they have to talk to the client directly. वैसे तो ये होता नहीं है, बहुत कम केस होता है, but in case they have to talk to the client directly, it is evident कि it is important कि English अच्छी हो कहीं ना कहीं. तो some companies, कुछ companies देखती हैं, कुछ नहीं भी देखती, but इफ यू थिंक कि जो लैंग्वेज का बैरियर है, इट इज लाइक आपको थोड़ा सेटबैक कर रहा है आपके टेक्निकल स्किल्स शोकेस करने में, देन यू कैन स्विच टू हिंदी. एंड इन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज दैट आई हैव सीन, राइट, वैसे तो आई हैव गिवन मोस्ट ऑफ माई इंटरव्यूज इन इंग्लिश, लाइक ऑल ऑफ माई इंटरव्यूज इन इंग्लिश, बट
कई बार क्या होता है कि थोड़ी बहुत अगर हिंदी निकल भी आए तो दे डोंट माइंड, राइट, बिकॉज इन द टेक्निकल इंटरव्यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल इंटरव्यूज हियर, ऑलराइट, टेक्निकल में अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जो नॉलेज है इफ इट इज गेटिंग बैरियर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, तो यू कैन स्विच टू हिंदी, इट इज ओके, बिकॉज द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज असेसिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ योर टेक्निकल स्किल्स and not on the basis of your English, right? अगर skill है आपके पास, if you and if company thinks that you are worth that particular role or position, they will not have any problem with you talking in Hindi, right? And I think that answers the question. But in if we talk about personal interviews, so वही बात आ जाती है, पर्सनल इंटरव्यूज में मोस्टली कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, एंड कहीं ना कहीं आप यू कैन ट्राई टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, राइट, थोड़ा मतलब इस टेक्निकल पे जोर तो देते हो, इंटर इंटर कम्युनिकेशन पे भी जोर दो, ठीक है। इफ यू वांट टू इम्प्रूव द इंग्लिश, आई वुड रिकमेंड वाचिंग सम इंग्लिश मूवीज, ठीक है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा एंड ऑल्सो ट्राई टू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश, थोड़ा चैटिंग करते हो तो इंग्लिश में कर लो, राइट। तो लाइक ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है, ट्राई टू वर्क ऑन इट, बट इफ़ यू थिंक दैट इट इज़ लाइक थोड़ी रोक बन रही है तुम्हारे टेक्निकल इंटरव्यूज में, तो इट इज़ ओके टू समटाइम्स स्विच इन टू हिंदी, यू कैन ऑल्सो आस्क द इंटरव्यूअर, ठीक है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, यू डोंट हैव टू बी शाय अबाउट इट, you can just ask the interviewer and in most of the cases he'll be okay with it, but in case of personal interviews I wouldn't recommending asking the interviewer, ठीक है। तो I think that answers your question. Thank you, sir. All right, any other student? Okay. Is there anyone else who want to ask some questions? You guys can just raise your hands. I'll call out your names. Anything you want to know about interviews, about Walmart, ठीक है, like if you want to apply off campus for the Walmart or any other company, right, or if you want some more tips about how to prepare yourself. All right, Abhishek Rana, here we go again. Sir, I work as a community leader of community ninjas, but I have an issue कि how I retrieve मतलब आगे फ्यूचर में क्या करना है, क्योंकि आई आल्सो वर्क एज फुल स्टैक इंटरनेट से एपीआई, तो सर हर चीज़ मैच हो रही है और कुछ आगे समझ नहीं आ रहा है। All right. So Abhishek, I think you should follow what you think is your passion, right? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट कोडिंग में है and if you want to be a coder, ठीक है, whether it is a software developer or even a web developer, if you want to be a web designer as well, तो pick anything that you like, ठीक है, because you don't want to do something that you don't like for your whole life for just earning bread and butter, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम एक जेल में बंद हैं, बस हम वो जबरदस्ती कोई काम कर रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, तो डोंट डू दैट, ठीक है। ट्राई टू टर्न योर पैशन इनटू अ प्रोफेशन, राइट। तो अगर आपको लगता है आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है, पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाओ, देन मूव ऑन टू द डेटा स्ट्रक्चर्स, देन अ लिटिल बिट ऑफ MySQL टू, एंड देन प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज, ऑलराइट। So, and if you think you are not a programming person, you can opt for designing, you can opt for graphic designing, animations. Like there are a lot of fields, there are many fields. But if you want to, if you have a confusion, it's only you who have to decide, right? Earlier there was a big, like starting में क्या होता है, ये चीज़ मोस्टली बच्चे करते हैं कि वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्राई कर लेते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे शुड चूज। ऑलराइट, जस्ट listen to your heart, what you want to do, like what are you passionate about, and then turn your passion into profession. All right. थैंक यू सर। All right, any other student? Anything, like कुछ भी पूछ लो, किसी भी कंपनी को लेके पूछना है कि लाइक गूगल में क्या हिसाब है, माइक्रोसॉफ्ट कैसे हायर करती है, एनीथिंग, नॉट जस्ट लेट्स जस्ट नॉट लाइक इसको सिर्फ वॉलमार्ट पे मत रहो। सर यस। सर सर कितने राउंड होते हैं सर? जैसे अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ सर, मुझे किसी कंपनी में रेफर चाहिए, तो उसके बाद सर कौन कौन सी चीज़ें होती है, मतलब एनी? All right. So refer system is a bit different, right? Right. तो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं, इनका थोड़ा अलग हिसाब रहता है, ठीक है। तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट जब होती है तो द कंपनी फर्स्टली गिव्स ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू द कॉलेज एंड कॉलेज विल टेल यू लाइक वेदर देयर विल बी 3 टेक्निकल असेसमेंट्स,
3 टेक्निकल टेस्ट होंगे या 4 होंगे या एक भी होता है कहीं में, ठीक है, वॉलमार्ट में एक ही था. And then there will be at least 1 to 2 technical interviews, and then there will be a personal interview or the HR round directly. All right. तो different companies का different होता है. Like some companies take 3 technical interviews and some companies just take 2 technical interviews. For Walmart, it was first a technical assessment in which there were MCQs and 2 coding questions, and after that first technical round and then second technical round, and then it was the last one was the hiring manager plus HR round, right? तो टेक्निकल में तो टेक्निकल हो गए क्वेश्चंस, ठीक है. पहले टेक्निकल असेसमेंट हुई. जो फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू था उसमें क्या था, दे वर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द पर्टिकुलर लैंग्वेज दैट आई चोज. लाइक मैंने जावा बताई तो जावा के क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड माई सीक्वल, राइट, डेटाबेस के रिगार्डिंग. तो फर्स्ट इंटरव्यू में ये था, एंड इन द सेकंड इंटरव्यू इट वाज टोटली फोकस्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. आई वाज गिवन अ कपल ऑफ coding problems to solve, and then I was also given an aptitude problem to solve. I cannot disclose those questions, but they were mostly focused on linked lists and trees, right? So basic questions थे कुछ, we can say, if you have worked on data structures you can solve those questions, right? अगर आपको पता है min heap max heap, if you have like deeply पढ़ रखा है तो कर सकते हो, it won't be an issue, right? And the last one was the hiring manager plus HR round. In the hiring manager round जो हमारे सामने बंदा होता है, he is at least 10 to 11 years experience होता है वो कम से कम, and he is a hiring manager. He has a technical team in the company, ठीक है. अगर हम select होते हैं तो इन्हीं hiring managers में से किसी एक की टीम में जाते हैं. तो हायरिंग मैनेजर बेसिकली चेक्स कि आपने किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, एंड वो हमसे उन प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछते हैं कि उसकी वर्किंग को हमने कैसे हैंडल किया था, व्हाट वर द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट वी फेस्ड इन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट्स. एंड ये सब पूछते पूछते हम कैसे जवाब दे रहे हैं, हमारा बिहेवियर क्या है, हम नर्वस तो नहीं हो रहे. दे चेक ऑल दीज थिंग्स, राइट. तो इट वाज अ हायरिंग मैनेजर प्लस एचआर राउंड्स. बेसिकली कंपनीज में एचआर राउंड अलग होता है. एचआर राउंड में बिहेवियर ही चेक किया जाता है एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का, लाइक वेदर ही इज काम और नॉट, लाइक वेदर ही इज स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली और नॉट, वो नर्वस तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें. इसलिए आई एम सेइंग कि अपने इंटरपर्सनल स्किल्स पे वर्क ज़रूर करो. Try to be calm during interviews. If you are getting nervous, it's okay. Just practice in front of a mirror and give as much interviews as you can. Give mock interviews as well. जितनी practice करोगे, you will eventually get better. ताकि जब तुम्हारी dream company आए, you can give your best. Thank you, sir, for your support. It's all right. So, any more questions, students? हेलो भैया, ये मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए C++ यूज़ कर रहा हूँ. तो All right. मैं DSA ये साइड बाय साइड सीख रहा हूँ, और आई जस्ट स्टार्टेड यूजिंग फ्लटर ऐप डेवलपमेंट. सो will it be helpful for my make resume more strong? Yes, because you are doing 3 things at a time, and all of these 3 things will be helpful to make your resume stand out. If you are using Flutter, तो Flutter I guess एक emerging technology है, right? Flutter is I think apps बनाने के लिए यूज होती है, iOS as well as Android, right? तो Flutter कहीं ना कहीं आपके resume को stand out करने में help करेगा. And you are also working on data structures and algorithms as well as on your problem solving skills. So these things will make your project, make your resume stand out. But make sure you use Flutter for building innovative projects, right? कुछ apps बना रहे हो तो try to पूरी ऐप इनोवेटिव हो ना हो, लेकिन कुछ ऐसा फीचर जरूर हो उसमें जो कि बाकी सिमिलर एप्स से उस पर्टिकुलर ऐप को स्टैंड आउट कर रहा हो, राइट. एंड फॉर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है. लाइक इफ यू हैव लर्नड लिंक लिस्ट, ठीक है, तो लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम्स सॉल्व करो. इफ यू आर डन विद स्टैक्स एंड क्यूज तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो. Mostly websites have an option to just filter the questions with respect to the topics, right? कि अगर array के questions चाहिए तो सिर्फ array के आ जाएंगे, linked list के चाहिए तो linked list के आ जाएंगे. तो इससे क्या होगा, तुम जो data structures पढ़ रहे हो उसकी proper practice हो जाएगी. For me, when I started problem solving, I firstly started with HackerRank, then I shifted to CodeChef, and then later I shifted to CodeSignal and LeetCode. Alright, so HackerRank like हैकर लिंक पे काफी तुम्हें इजी प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगे, तो तुम धीरे धीरे स्टेप अप करते जाओगे.
All right. So I think that answers the question. Thank you, भैया. All right. I can see more hands standing. Mohammed. So thank you, sir. Uh, so my question is, sir, I want to be a JavaScript developer. So I need the double OP concept because when I using JavaScript programming, we will not use all of the double OP concepts. So is it enough, sir, or I want to study double OP concepts in other languages? So, and my second question is, if I study double OP concepts in other languages, it will use for JavaScript developers. All right. So we can use OOPS concepts in JavaScript as well, right? We know that JavaScript isn't an object-oriented language, but it is an object-based language. If you Google, you will get the difference between both of these. So JavaScript uses prototype-based inheritance, right? You just have to like do some Google Google search on this again. But yes, you can use OOPS concepts on in JavaScript as well, right? ये नहीं है कि तुम classes objects use कर ही नहीं सकते हो. It is not like that. You can use OOPS, right? If you are building some projects, you can try to implement OOPS concept. You can try to do it with the help of classes and objects here and use some inheritance. Like it is just a programming paradigm, and it'll be. I would recommend working on OOPS because whether you are working with JavaScript or any other language, oops is like we can say a central concept है, right? If you know it, it's only for your own good, and it is not that much of a difficult concept as well. It will be it's okay if you want to learn oops with a basic programming language like C++, right? If you are working with JavaScript, I think you can easily get around the basics of the C++ as well because it is not a big deal. C++ is like उसके basics जो हैं they are easy to get a hang of, right? So if you think that you want to learn OOPS concepts with the help of other language, I would recommend C++ actually, not C. All right, but I would recommend you to learn these concepts because in the interview rounds, they might ask you these questions. And for basically for if you want to work as a JavaScript developer, right? I also got another offer as a front end developer in a very good company. So in the whole interview process of that company, there were mostly tasks given to us that we had to perform. Right? They gave us a blueprint to design a particular web page, and then for another task, they asked us to implement a to-do list with the help of local storage. All right. So also focus on the networking concepts here as well. Like if you want to be a full stack developer, you must know how a server and client relationship works, how data gets transferred between client and server, and what are web sockets, and many more different things, right? So इन चीज़ों पे भी focus करो, and oops is not a big thing to worry about. Just implement it once or twice and theory पढ़ लो इसकी, right? So that will be enough. So I guess that answers your question. And do you have any other question, Mohammed? If I want to be a JavaScript developer, sir, then I need algorithms. All right. Is it right? So it is good to have knowledge of OOPS concepts and data structures and algorithms, right? Because talking about again my experience, right? So I gave interviews in companies Josh Technology. Okay, it was a very good company. I got placed in that company. So in the interview process, they asked me about OOPS concepts as well as they gave me problem solving questions, right? If we talk about data structures and algorithms, it is not necessary that you have to learn data structure and algorithms in JavaScript only, right? If you want, you can use any other language, but if you want to get placed as a web developer, you have to also work on data structures and algorithms as well because data structures and algorithms somehow showcase whether you are good in solving problems or not, whether you are able to think extensively, whether you have the critical thinking ability कि अगर आपको कोई problem दी जाए, if you are given any problem, whether you will be able to solve it or not. Because when we talk about working as a web developer, the companies expect from you that you just don't
stick to only one thing. Like if you want to get placed as a front end developer, they expect from you that in future you can also work on the back end as well. And for the back end, you need to have good problem solving skills, and you need to have a great knowledge of data structures as well. So yes, companies will expect from you to have good skills with data structures and algorithms. So you have to work on it. You cannot ignore them. All right. Oh, so my last question is, I have little bit confused, sir. So that JavaScript is as a programming language or scripting language? All right. So yes, that's a good question. Even I don't know whether it is a programming language or a scripting language, but I think I won't give a wrong answer because I don't know. But जैसे मुझे लगता है कि it is a scripting language and it is a single threaded language. You know what is a single threaded language? Yes, I have some ideas, sir, about that All right. single So in thread. single threading language, what happens is only one line of code is getting executed at a single time. Right. So, but in other programming languages, we use threading, multi-threading, which do multiple tasks at the same time. All right. So you will basically you have to search these things, and you'll get a lot from the JavaScript. Okay, you'll get to learn a lot about JavaScript because JavaScript is a big thing. ECMAScript is like I have studied a lot of JavaScript, and I would say that it is a scripting language basically, right? So JavaScript is a big thing, and it has a future. It has a bright future. So you are going on a great path. Just go with it. Work on data structures and algorithms, and you'll be good to go. Okay, thank you so much, sir. All right. So Manisha, I guess you raised your hand. Manisha, are you here? All right. Manisha is MIA. So any other All right, questions? sir. Daman, it was really a great session with you. And actually, it is very well said that a student only can solve the queries of a student, because teachers cannot tell that broadly that the way you did. So it really amazing and knowledgeable session it was. And also, to the audience, before you press that red button, I would like to remind you that we are also having a session tomorrow with someone who will tell you the path for organization in GSOC. So I hope you will not miss that session. Also, I want to thank you, a big thank to you, Daman, that you joined us today and shared your journey and the paths that every one of us can be the part of that journey also. So really thankful to you. Skill Valley is really thankful to you, Daman. Thanks a lot for joining. It was an honor. So I guess Anjali here has a question. So let's answer her question before leaving. Yeah, sure. Anjali, go. So, what type of question are asked in HR interviews? Companies like Cognizant, IBM. All right. So in HR interviews, Cognizant, IBM, mostly companies में क्या होता है? They ask like very random questions because in the HR interviews they just judge us how we are behaving while answering those questions, and even sometimes they ask some questions that put some pressure on us. Like they'll put us in a like very difficult situation, and they'll ask us how we will get out of it. For example, I'll just give you a question. You are working with your teammate, and your teammate is not taking the responsibility of his work. Like he is being very negligent to his work, and there is a lot of workload on your side. You have to work much more now. Then how will you handle this situation? So in HR interviews they ask you these kind of questions. They put you in some kind of situations, and then they see how will you get out of it. And they also notice your behavior while answering those questions, like whether you are looking here and there while thinking about it. So these kind of things थोड़ा दिक्कत कर जाती हैं ऐसी चीजें. So make sure what I would suggest you for an HR interview is put a smile on your face. Like हमेशा smile जरूर रखो face पे, because it is a good gesture, right? And always look into the camera, right? Always look into the camera while answering the question. Wear a smile and don't get nervous, because HR interviews basically check intercommunication skills, your calmness, your confidence, and how will you get out of the practical life situations, right? And sometimes for me, they ask me a question like,
if you are in a stressful situation, if you suffered a burnout, राइट कि आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, बहुत ज़्यादा थक गए हो, आपका कोई मन नहीं कर रहा काम करने का, हाउ यू हैंडल दोज सिचुएशंस, राइट? इफ यू आर इन अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, हाउ यू हैंडल दोज? So you have to build answers for these kind of questions, right? And basically HR interviews, sometimes they ask you very unexpected questions and they'll be very random, and you will be like ये कैसे questions पूछ रहे हैं, but they ask those questions and they just focus on you. वो तुम्हारी तरफ देख रहे होते हैं कि ये जब आंसर कर रहा है या कर रही है, ये कैसे कर रही है, whether she is getting nervous, ये whether she is thinking too much, they see these kind of things, and HRs are basically they are experts, right? वो तुम्हारा बिहेवियर देख के बता सकते हैं कि ये इंसान कैसा है. So prepare for the HR interviews as well, work on your communication skills, right? And then you'll be good to go, right? Just wear a smile, be confident, be positive. That's it. All right. So, any more question, guys? Thank you, sir. Welcome. So, any So more I question, hope guys? the curiosity of our audience has already ended, and as you told everything, so nothing is left to know more, and we'll be following your path that you just explained it in a very good way. So very thanks to you, Daman, for coming here and joining us, sharing your experience. Expecting very many such more sessions when you just join Walmart, wearing Yeah. that bag and coat. So we'll be having many such more sessions with you. Hope you have Yeah. a great day. So thanks a lot. Thanks a lot, guys. Have a great day.